पर मोहम्मद बिन वाल मोहम्मद सल्लल्लाहु पर हबीब खुदा फातिमुल अंबिया बाबा से बुलंद सल्लल्लाहु नारे हैदरी बाबा से बुलंद सल्लल्लाहु Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République islamique d'Iran, Moniri Nik et son épouse, Conseil régional na Manwata Pramukh Saheb, Conseil régional na Huk Pramukh Saheb, तुलियार जमातना जोशीला प्रमुख साहेब तथा तेना कार्यवार कमिटीना मेंबरो, काउंसिलरो, माजी प्रमुखो, मेहमानों, भाइयों, बहनों, बच्चाओं, सलाम अलैकुम। सर्वप्रथम આપણો જે ઉદ્ઘાટનનો પ્રોગ્રામ છે વિનંતી છે તુલિયા જમાતના આલિમે દીન પાસે કે અહીંયા આવી અને કુરાને પાકની તિલાવત મળે અને આપણે બધાય તેના માનમાં ઊભા થાય પર મોહમ્મદિન વાલ મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم હવે કસીદાનો પ્રોગ્રામ છે વિનંતી કરીશ ભાઈ રેઝા ઇકબાલ પ્યારાલી માવજી અહીં આવીને તેનો કસીદો પેશ કરે और मोहम्मद बिन वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला
हैदर हूँ मैं हैदर, हैदर हूँ मैं हैदर, हैदर हूँ मैं हैदर, हैदर हूँ मैं हैदर। कहते थे अली कूफे में ये बरसर मिंबर, कहते थे अली कूफे में ये बरसर मिंबर। हैदर हूँ मैं हैदर, हैदर हूँ मैं हैदर। हैरान ये दुनिया हैरान है दुनिया क्यों मेरे मौजिज़े सुनकर। हैदर हूँ मैं हैदर, हैदर हूँ मैं हैदर, हैदर हूँ मैं हैदर, हैदर हूँ मैं हैदर। सूरज मेरे कहने पे भला क्यों न पलटता, सूरज मेरे कहने पे भला क्यों न पलटता। तारा मेरी दहलीज पे कैसे न उतरता। मैंने ही जलाए मैंने ही जलाए थे बुझा देता मैं अक्सर। हैदर हूँ मैं हैदर, हैदर हूँ मैं हैदर, हैदर हूँ मैं हैदर, हैदर हूँ मैं हैदर। कहते थे अली कूफे में ये बरसर मिंबर, कहते थे अली कूफे में ये बरसर मिंबर। हैदर हूँ मैं हैदर, हैदर हूँ मैं हैदर। मैं गैब हूँ दुनिया को ये इदराक नहीं है। हाँ मुझ पे किसी नाम का इफलाक नहीं है। बस मुझको समझ सकते, बस मुझको समझ सकते हैं अल्लाह पैगंबर। हैदर हूँ मैं हैदर, हैदर हूँ मैं हैदर, हैदर हूँ मैं हैदर, हैदर हूँ मैं हैदर। कहते थे अली कूफे में ये बरसर मिंबर, कहते थे अली कूफे में ये बरसर मिंबर। हैदर हूँ मैं हैदर, हैदर हूँ मैं हैदर। है रब की सदाकत के हवाले मेरे बस में। कुरान में अल्लाह ने है खाई मेरे कसमें। लारे बाला कब है, लारे बाला कब है मेरा कुरान के अंदर। हैदर हूँ मैं हैदर, हैदर हूँ मैं हैदर, हैदर हूँ मैं हैदर, हैदर हूँ मैं हैदर। कहते थे अली कूफे में ये बरसर मिंबर। हैदर हूँ मैं हैदर, हैदर हूँ मैं हैदर। हैरान है दुनिया हैरान है दुनिया क्यों मेरे मौजिज़े सुनकर। हैदर हूँ मैं हैदर, हैदर हूँ मैं हैदर, हैदर हूँ मैं हैदर, हैदर हूँ मैं हैदर। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। પ્રમુખ સાહેબ, આ જો આપણે
જોઈ કે જો 17 જમાત મડગાસ્કરમાં હોય તો મને લાગે છે કે પૈસાવાળી જમાત તુલિયાર છે. કારણ કે આવી ઇમારત તમે હમણાં આવ્યા એટલે આપણે જોવા ગયા બધી ઇમારતો જે તમે અજબ થઈ ગયા. પણ તુલિયારવાળા જ્યારે જી કોન્સેલ રિજનલના પ્રમુખ આવે છે, અમારી પાસે એવું ઇલ્મ છે કે તેઓને અમે ખેંચે છે અને બધું અમને દેવા માંડે છે. આજે હાજરી ઓછી નથી, પણ મેમ્બરો ઓછા થઈ ગયા છે. એટલે કે પ્રમુખ સાહેબને કીધું પાછું રેસાસમાં કરો એટલે લેવી જરાક આપણી ઓછી થઈ, આપણે વધારે. ઈરાન તશક્કુ મિકુન્નિમ કે તુલિયાર જમાત ઇફ્તિખાર દાદન વાદર ઇफ्तिहाए हुसैन मेमोरियल स्कूल तशरीक और दान. હવે આપણા જમાતના જોશીલા પ્રમુખ સાહેબ તેનું પ્રવચન કરે છે. પણ આવી ઇમારત થાય અને આપણી સલવાદ ઓછા અવાજથી નીકળે તો આ મહેમાનોને એમ લાગે છે કે આ લોકો રાજી નથી. પર હબીબે ખુદા ખાતિમુલ અંબિયા બાવાઝ બુલંદ સલવાત. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ulama Ikram, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République islamique d'Iran, Conseil régional na Pramukh Sayed, Conseil régional na Up Pramukh Sayed, Maji Pramuko, Consilero, Bayo, Mahbeno, Vahala Batsao, Salamun alaikum. शुक्र से अल्लाह ताला नो જે કાલી કે કાયનાત છે કે તેઓ આપણને તોફીક આપેલી આ મહાન કામમાં શરીક થઈ શક્યા. તે બાદ દુરૂદ ઓ સલામ મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ ઉપર. આજના આ ખુશીના મોકા ઉપર સૌપ્રથમ પધારેલા મહેમાનો, Son Excellence République Islamique d'Iran ambassadeur, Conseil régional na Pramukh Sayeb Al-Haj Rosan Ali Navaz Ali Molu, તેમજ Conseil régional na Up Pramukh Sayeb Al-Haj Mohammad Raza Jivan, તમામ માજી પ્રમુખો, કોન્સિલરો, કરતા હર્તાઓ, બાયો, માહબેનો અને બચ્ચાઓની વેલકમ, ભલે પધાર્યા, ખુશામદીદ, bienvenue. તુંગસ્વાના શબ્દોથી આપ સર્વેઓનું આવકાર કરી રહ્યા છે. આજે આપણે ભેગા થયા છે કોલેજ હુસેન મેમોરિયલ સ્કૂલની ઇમારતના ઉદ્ઘાટન માટે. તેમાં બત્તીમો અથવા જેતાસ છે અને બીજું બત્તીમો જે તમારા ધ્રોઆત્મ છે, જેને રિહેબિલિટે કરવામાં આવેલું છે. આ એ બત્તીમામાં આપણે 2 વેરાંદાને સુપ્રીમે કરી અને વચમાં કુલવાર બનાવેલ, જેના જરિયાથી આપણે 9 સાલ de ક્લાસથી 18 ક્લાસ de ક્લાસ મળેલ છે. આ કામ થયું છે તે અલ્લાહની મદદથી અને તમારી દુઆથી કરી શક્યા છે. આ મોકા ઉપર
ખાસ કરીને તેમના આ મોકા ઉપર conseil régional ખાસ કરીને તેમના જોશીલા પ્રમુખ સાહેબનો દિલથી શુક્રિયા અદા કરું છું કેમ કે આ કામ શરૂ થાય એની પહેલાં તેઓ અહીંયા પધારેલ હતા અને કમિટીના મેમ્બર સાથે એટ્યુડ કરેલ. અમારા નજરોની સામે હજી એ મંઝર નથી ભૂલાતો કે પ્રમુખ સાહેબ પોતે મેટર લઈને મેઝ્યુર કરતા હતા. અમારા પાસે શબ્દો નથી કે આપનું શુક્રિયા અદા કરીએ કેમ કે શુક્રિયા અદા કરવા માટે શબ્દોની જરૂર છે અને તમારી ખિદમતો સામે શબ્દો પણ કમજોર છે. બસ દુઆની કલામથી અલ્લાહ પાસે દુઆ છે કે અલ્લાહ તાલા તમારી ખિદમતોને કબૂલ કરે, દિનની ખિદમત કરવાની ઓર તોફીક ઇનાયત કરે, તમને તેમજ તમારી ફેમિલીને શાદો આબાદ રાખે. ત્યારબાદ શુક્રગુજાર છું સ્કૂલ કમિટીના મેમ્બરોને કે જે દિલથી કુરબાની તેમ પૂરેપૂરો સાથ આપેલ છે. મને યાદ છે કે જ્યારે અમુક દિવસ આવતા ત્યારે અમુક સ્કૂલ બાબતેની ચર્ચા અહીંયા કરતા હતા અને બધાય હાજર થઈ જતા હતા. હાલાંકે દિવસ એક રેપોનો દિવસ છે પણ તેઓ આરામને મૂકીને હાજરી આપતા હતા. તેઓનો દિલથી આભાર માનું છું અને દુઆ છે કે પાક પરવરદિગાર તેઓને અને તેઓના ફેમિલીઓને શાદો આબાદ રાખે અને દિલની હર ઉમીદોને પૂરી કરે. ત્યારબાદ આભાર વ્યક્ત કરું છું જમાતના તમામ મેમ્બરોને કે જેઓના સાથ વગર આ કામ કામયાબ ના થઈ શકે. દુઆ છે કે અલ્લાહ પાક આપ સર્વેને શાદો આબાદ રાખે, આફતોથી દૂર રાખે અને ઉમીદોને પૂરી કરે. આ મહેમાનોને જોઈને હું તમારી સમક્ષ ફ્રેન્ચ જબાનમાં મારું પ્રવચન કોન્ટિન્યુ કરું છું. Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de la République islamique d'Iran, bienvenue pour votre dévouement. Nous savons que vous avez consacré votre temps en venant ici à Tuliar pour assister et participer à cette cérémonie d'inauguration. Rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir bien voulu protéger votre voyage et nous prions également pour votre retour. Votre venue avec votre femme donne un caractère d'officiel à notre fête et nos sœurs sont contentes de l'avoir ici présente parmi nous aujourd'hui. Nous espérons que vous allez passer un excellent séjour à Tuliar. Nous vous remercions infiniment pour le choix de notre ville et plus précisément le collège Hussein Memorial School. Qu'Allah Ta'ala protège votre famille et vous-même et qu'il réalise tous vos vœux et souhaits de bonheur et de prospérité. Nous réitérons les remerciements que nous venons d'évoquer tout à l'heure à Monsieur le Président du Conseil régional. Nous aimerions porter à votre connaissance que le Président Al-Hajj Rossan Ali Navazali Molou a pris des mesures de ses propres mains, ce qui témoigne combien il a voulu apporter sa propre contribution pour la rénovation, la construction des bâtiments scolaires. En ce moment, il est avec nous, avec son vice-président, pour l'inauguration. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le vice-président. À part la construction, les tables-bancs sont entièrement renouvelées pour être adaptées à la modernité. Il reste à ce jour 5 salles de classe à meubler. Le nouveau bâtiment à 3 étages sur pilotis en face de vous ou derrière mon dos va abriter les élèves du second cycle, c'est-à-dire
de la classe de seconde en terminale. Chaque étage comprend 4 salles. Il y a une salle destinée pour la bibliothèque, une salle de prof dotée d'ordinateurs et d'Internet, une salle de laboratoire et au-dessus du 3e étage, c'est la terrasse. Le bâtiment à 3 étages nous a coûté 443 millions d'ariary et c'est avec les travaux supplémentaires. La surface totale de ce bâtiment est de environ 1000 mètres carrés. La réhabilitation s'élève à 156 millions d'ariary. La cour de récréation et le terrain de sport est en pleine construction et vont être, Inch'Allah, construits. Le béton coûte par mètre carré 50 000 ariary. Le bitumage pour le terrain de basket et de volleyball coûte 40 000 ariary le mètre carré. Nous remercions l'entreprise SAMS dirigée par M. Alain Moustapha Nassor pour la qualité du travail fourni. Désormais, nous avons installé des caméras de surveillance par Internet à l'extérieur des salles de classe pour la sécurité des élèves, ce qui double la vigilance de la surveillance, à part ce qui assure les personnes physiques. Le coût s'élève à 13 millions d'ariary. Et nous remercions M. Rafik Abidoussen pour le rapport qualité-prix de matériel fourni. Les résultats de l'année scolaire sont satisfaisants et nous tenons à présenter à l'ensemble du personnel du collège notre gratitude, personnel enseignant, administratif ou autre, et même des parents qui ont bien voulu se donner les mains pour la bonne marche de l'établissement dans son ensemble. Nous aimerions apporter plus de précisions pour les résultats des examens scolaires 2014-2015. CEPE 93,33%, BEPC 91,89%. Une élève du collège Hussein Memorial School est classée première sur tout l'ensemble de la ville de Tuliar. Permettez-moi de vous présenter la principale du collège, Madame Jocelyne Razaf Mahataj. Merci, madame. 30 ans de service dans l'enseignement. Elle a un diplôme d'études supérieures spécialisé à l'éducation et formation. Elle est dynamique, sociable et sévère. Monsieur Hervé Cheki. Merci, monsieur. Monsieur Hervé Cheki, notre nouveau responsable de vie scolaire, qui assure la bonne marche de la discipline. Un homme intègre et sincère. En voyant sa taille, je pense que la discipline sera bien instaurée. Monsieur Jean-Louis Victor. Merci, monsieur. Président de l'association de personnel du collège, un homme de confiance qui sait écouter les autres. Moi, personnellement, je tiens à dire merci de vive voix les membres du comité scolaire qui viennent répondre à notre appel à toutes les réunions, de jour comme de nuit. Sans leur soutien, moi, personnellement, je ne peux rien faire. Je m'adresse personnellement aux membres de Jamaat qui soutiennent les différents projets avec leurs prières pour la bonne marche de nos activités. Il y a beaucoup à faire. Nous comptons beaucoup sur Allah
et vous tous avec vos prières, car vos appuis sont efficacement remarquables. À Monsieur Rasuluvuson Andiamaru Zatouf, PDG de l'entreprise Rasuluvuson, nous avons l'immense plaisir de vous évoquer notre joie et notre plaisir pour vous exprimer notre gratitude et notre satisfaction de la qualité de travail que vous avez rendu. Nous trouvons jour pour jour le dynamisme et la volonté de votre équipe de faire mieux. Les travaux avancent vite. L'équipe se serre les coudes et le respect des uns et des autres se remarque. Toutes les activités sont tellement remarquables, si bien que tout le monde se réjouit de l'avancée spectaculaire avec la qualité qui se reflète. Nous espérons que dans les prochains jours, nous devons travailler encore ensemble. Encore une fois, nous vous remercions. Transmettez nos remerciements également à vos employés. Nous vous délivrons une médaille, un diplôme d'honneur et un petit cadeau à votre endroit pour exprimer notre gratitude de la qualité de service fourni. Encore une fois, nous vous remercions. Je prie à Monsieur le consulaire Al-Haj Hanif Jafar de lire le contenu du diplôme. Bismillah. Nous leur donnerons leur récompense en fonction de leur meilleure action. Coran Surat Nahl, ayat 97. Diplôme d'honneur, Association Koja Shia Nasri Tuliar Madagascar, offre avec joie et toute sa gratitude le présent diplôme d'honneur avec le noble titre de mérite à M. Rasuluvuson Andiamaru Zatouf, en reconnaissance de sa sympathie, de sa loyauté et des services rendus à l'humanité et en particulier au collège Hussein Memorial School de Tulia. Le président Anil Akbar Ali Belzi, le secrétaire général Reza Mahmoud Razi Nassor. Je prie Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le président du conseil régional et Monsieur le vice-président du conseil régional de lui remettre la médaille, le diplôme d'honneur et le petit cadeau de la part de Jamaat de Tulia. محمد وآل محمد صلوات. Huh?